उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि मेंस की तैयारी शुरू कैसे करनी है और थ्रू आउट कैसे करनी है, रिविजन्स कैसे करनी है, स्केलेटन नोट्स कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं. All these things I told you in my previous lecture. So first thing we must remember, we have to start preparation from judiciary, from the mains and the interview. Now when I say mains का interview, it means every topic. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको किस तरह आपको पूरे लॉ के पार्ट्स देखने हैं, चैप्टर्स देखने हैं, टॉपिक्स बनाने हैं, सब टॉपिक्स बनाने हैं, और उनके बाद then you have to start making your notes. That was in my last lecture. So please go into that. Now we are today on the next part. Today's part 2 of my last time's lecture. Once you have prepared for your mains, you have divided your entire law into topics, subtopics and short note topics. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप पुराने पिछले टाइम के पिछले 10-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लो, नॉट ओनली ऑफ योर ओन स्टेट, आसपास के जो जैसे पंजाब हरियाणा का भी देख ले, हिमाचल का भी देख ले, राजस्थान का भी देख ले, ऐसे आसपास के सारे स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लो. लकीली ये किताब है, मैंने देखी है, जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर्स टॉपिक वाइज दिए गए हैं. आई विल गिव यू द नेम ऑफ दैट बुक. सिंगल की थी, जिसमें क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं सारे. तो वो क्वेश्चन पेपर्स की किताब ले लो और उसको फिर उन टॉपिक्स के साथ को रिलेट करो. फॉर्चुनेटली दैट बुक हैज गिवन टॉपिक वाइज दिए हैं उसने, तो वो आप कर सकते हो. तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये होता है. ना पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारे 5 पेपर हैं, 3 हमारे लॉ के हैं, 1 is of language, 1 is of English language and other is of vernacular language. We must prepare accordingly, and please remember, do not take language lightly. Those who take language lightly never succeed. This is a very strong statement which I am making, and this is what I am telling you out of experience. Those who score well in language always clear. So how do we score well in language? I told you last time, we have 2 parts of language. One is the essay part and the other is the grammar part. Grammar part is normally 50 marks, essay is 100 marks. I want you to score 50 out of 50 in this. This is totally in your hands. I see no reason why you should not be scoring complete marks in this. We do not score 50 out of 50 in this because we take it lightly. Do not take it lightly, it is a paper. So this is the first thing. Our book's name, sweetie, it is a question paper, हरे से रंग की किताब है. If I'm not wrong, single publications है. सिंगल पब्लिकेशन है, उसमें पूरे क्वेश्चन पेपर और भी होंगे, मैंने तो एक देखी है अभी तक. ओके, सो पहला पॉइंट है कि हमें 50 ये लेना है. और दूसरा, एसे की तैयारी अभी से शुरू कर दो. एसे की तैयारी रोज करो. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, रोज न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ो, उसका एक अच्छा टॉपिक निकाल लो, उसको डिटेल में पढ़ो और उसकी प्रेसी बना के लिखो, उसके अच्छे एक्सप्रेशंस नोट करो. आपका एक टॉपिक, एसे के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, लैंग्वेज प्लस कंटेंट. अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है पर आपके पास कंटेंट नहीं है तो लिखोगे क्या? तो 100 में से 5 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, 5 marks, 7 marks, 10 marks. You have lost 90 marks here. अब how much will you cover in law? You will cover 10 marks, 20 marks. You have lost 80 marks as compared to others. जो 80 marks आपसे आगे चल रहा है, उसको लॉ में कैसे हराओगे? So this is the strategy which you must always remember. Please do not forget, हर रोज सोने से पहले आप 1 घंटा या 2 घंटे लैंग्वेज रिलीजियसली करोगे. टेक इट एज एडवाइस, एक आदेश मान सकते हो एक गुरु का. बट दिस इज वन थिंग आई नो नाउ कि इस वजह से आप जज बन जाओगे. आई वॉन्ट कि 150 में से आप कम से कम 110 स्कोर करें. Students this time have scored 20, 30 out of 150.
35 आउट ऑफ 150, 40 आउट ऑफ 150, वो सब फेल हो गए। लॉ में उनके बुरे नहीं थे, somebody was scoring 110, 115, but they all flopped in language paper. English, almost all India common है, almost all over we have one paper of English. इसीलिए यस सदाम यूपी में 200 नंबर का है, इसीलिए मैंने क्यों शुरू किया, कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं पढ़ाता, हमने ये पहले शुरू कर दिया था अपनी अकेडमी में, और एज इट इज मैं ले आया हूं अनअकैडमी में। दैट इज व्हाई यू आर हैविंग रेगुलर लैंग्वेज क्लासेस, और बहुत सीरियसली लैंग्वेज को लेना है। सो आज से ही शुरू कर दो, न्यूज़पेपर ले लो जो आपको समझ आता हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो, जिनकी बहुत ही खराब है, टेंसेस खराब है, आई एडवाइज यू कि आप आइल्स का कोर्स ज्वाइन कर लो, ज्वाइन द आइल्स कोर्स। 1-2 महीने 3 महीने का थोड़ा बहुत पैसा तो लगेगा, मैं मानता हूं, पर उसमें बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जिनको बिल्कुल जीरो है उनको एक आइल्स का कोर्स कर लो और फिर इंग्लिश का हमारा यहाँ करो, दैट्स राइट वे। ओके, सो पहला काम हो गया, आज से आप रिलीजियसली एक काम करोगे, रोज न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट पेज जो होता है वो निकालोगे। उसमें आपको पॉलिटिकल नहीं लेने, उसमें आपको स्पोर्ट्स के नहीं लेने, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं आपके, रोज कोई ना कोई आते हैं, 2-3 पेपर लाइब्रेरी आती है, जो भी आते हैं। अगर बहुत अच्छी इंग्लिश है आपकी तो हिंदू पढ़ो, अगर कम है तो जो भी आपका इंग्लिश का पेपर आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, ट्रिब्यून आ रहा है, या जो भी आ रहा है, रीड दैट न्यूज़पेपर, ओनली द एडिटोरियल पेज। आई वांट यू टू डू दैट रेगुलरली. Do not waste your time on other pages of the newspaper, because the current event classes will cover that GK. So we have to now cover this. So this is my direction number 1. This is one thing which you will follow. Now for the vernacular, again the same story. Get hold of your vernacular paper which you are appearing in. Mostly Hindi is there. Now get a good newspaper of Hindi, whichever you find is good in your state, and follow the same thing. Open the editorial page and start writing your language. So every day you are going to spend 1 hour on your English and 1 hour on your vernacular language. I hope I'm clear on this. A. Now we go to the paper. Now when I go to the paper per se, we have 3 law papers. Law 1 consists of civil law. Law 2 consists more of family law. Law 3 consists of criminal law. ये 3 हमारे पेपर हैं। इन तीनों की अप्रोच हमारी मेंस में डिफरेंट है। Our approach to these 3 law papers is different vis-a-vis each law paper. How and why? I'll tell you. In your criminal law, you will get more proposition-based questions. In Delhi, you have almost here and here, you have proposition based. But other states, I'm noticing, these are mostly proposition based. These are both more descriptive, but also a few propositions, especially on CPC. This paper is the main paper where I'm targeting. I am targeting this paper number 2, family law. Family law is very limited. We have limited topics, limited judgments, limited amendments. And naturally, these questions are more or less straight. Only thing is that here, because family law, they want to go into details, and they will be bringing in questions which each and every question we can easily cover. And that is the reason why we will target this paper. In this paper, I want you to score more than 120 marks. And this is easily, we can do it. No, it will be easy, Madhavi, don't worry. You'll be able to, once you know the thing, aa jayega, ab dekhoge. So first, let's now start discussing we are going to target this paper. That means Hindu law, Muslim law, evidence,
लिमिटेशन और विच एवर वे आपके जैसे जैसे स्टेट्स में है। क्रिमिनल लॉ में इट्स अ वेरी डाइसी पेपर, क्योंकि इसमें आईपीसी के प्रोपोजिशंस हैं, सीआरपीसी के प्रोपोजिशंस भी हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हैं। एविडेंस will be more of them will be normally essay type, but also I can expect some propositions. This is the most dangerous paper, because even if I'm very good in criminal law, I may go wrong, and that is why I want you to keep a cushion here and also here. You can't lose much in civil law. Actually, people score less in civil law because their CPC is weak, and CPC forms about 40% of paper 1. Now, since your CPC is weak, that is the reason why normally students flunk in law 1. Haryana mein I saw last time only 6 students passed. Only 6 in mains. And you'll be surprised, out of those 6, 4 were my girls. The reason was that you have seen now, all those who are studying, I go into details. They had done the details religiously, and that is why they could clear. Now, the key to success in all these papers is conceptual clarity. If there is no conceptual clarity, if you make it as a judge, it will be a fluke. You are too lucky. That's all I can say. So first thing is conceptual clarity. Second thing is my absolute clarity of the law. ये दो clarity concept की और law पूरा हमारा क्या है, that is the way. अगर हम पहले आईपीसी को स्टडी, फॉजिमा, I will just clear. See, you have to study all together. Like after my IPC, I teach CRPC. If you are not a plus student, please go to my special classes on CRPC and IPC. I've given an overview. Please go for that. Vishesh, I've already done this in my plus class, how to memorize orders in CPC. So just go through them. वही तो कराया मैंने 2 दिन. Okay, let's quickly. No more questions. Let me first quickly finish my today's topic. You know, when you get the questions are of 3-4 types. There will be a full question of 20 marks or 15 marks these days. Oh, Fazima, you're from Pakistan. Oh, I see. But Fazima, you can, beta, you can always attend my special classes and go to my free YouTube channel classes, where I have given a complete way of memorizing all these subjects. Please go to Unacademy Anil Khanna YouTube channel, and a lot of my free lectures are there on a lot of things. Yes, Pankaj, I have about 100 students from Pakistan. In fact, some are practicing. We had a group earlier, but then unfortunately that these tensions which are there in our countries, we are not able to do much about it. But then I have students from Pakistan, I have students from Bangladesh, I have even students from Sri Lanka. They're all there. Okay, now let's see quickly. In these full questions, we have a complete question of 20 or 15 marks. Then we have questions of 7 marks. Normally, you have 3 sub questions which will be about 20 marks. Then we have questions of 5 marks, or we have short notes of 3 marks. This is how we are having questions. These ऐसे questions आएंगे. आजकल ट्रेंड क्या हो गया है? आजकल ट्रेंड ये हो गया है कि they are asking these questions. This is the trend I am seeing from the last 3 years. वो क्या कर रहे हैं, इस पहले क्या होता था, ये आता, ये ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड नहीं है. अब वो क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में 4-5 नंबर के दे रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, they are covering 4 topics. So if there are 6 questions and they are covering 4 topics, 24 topics आ गए. So that is the main danger which we have. Now they are asking a lot of topics. पहले होता था pick and choose कर लो topic, चलो ये कर जाते हैं. अब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते. That's the first thing. Now, once we get
Now how do we are in the examination hall, and now we see the paper. Step number 1, you have got 3 hours. Different states have different timings. Now I will divide my entire paper in 3 hours. So suppose I have 7 questions and they have parts. I will divide each question number 1, 2 parts. Question number 2, 3 parts. Question number 3, 4 parts. Question number 4, 5 parts. Question number 5, 1 part. Question number 6, 2 parts. Now what I have to do is, I have to divide 3 hours equally into 6 parts. ये पहला step है. You have to divide the entire paper into the number of questions you have to attempt. Now, suppose I'm getting 40 minutes. Suppose. That means I'm not going to spend more than 20 minutes on this and more than 20 minutes. But when I come here my 40 minutes will be divided into 4 parts. That means under no circumstances will I spend more than 10 marks on each part. This is the most important thing, and this is the mistake which 80% students are committing. That is why what happens is, the new trend is, they are putting very very lengthy papers. जान के सिर्फ वो जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, जो तेज लिख लेंगे, वही पास हो रहे हैं. So this is the reason why we first must do proper rationing of time. This is step number 1. So please remember, what is happening. Students are spending 60 minutes on this, suppose 50 minutes on this, 45 minutes on this, 45 minutes on this, and here no time is left. All of them are leaving 1 question, 2 questions, 3 questions. They are leaving a paper of 30 to 70 marks. When you leave the paper, वो 0 है. That is 0. Nobody will leave any question unattempted. You will not be able to pick up here. At this stage, you will not be able to pick up. You have to pick up here. So पहला मेंस का पॉइंट क्या है? राशन करो अपने टाइम को equal in all questions. So rationing of time is the most important thing, because suppose you know a question very well. This is the second point I was coming to, but I'll bring it here only. Normally what happens is, what we know very well, we tend to write more and more and more on that. But then what happens is, we are going to get 1 mark extra because we have written very well, or maybe 2 marks extra. But we are going to lose 70 marks in the end. ये कहाँ की अकलमंदी है? So one thing, you must be very meticulous. अगर मेरे 10 क्वेश्चंस हैं और मेरे को 10-10 मिनट मिले हैं हर क्वेश्चन के लिए राशनिंग के बाद, तो मैं इसमें 11वां मिनट नहीं लूंगा. Am I clear on this? First सक्सेस का मंत्र. So हर क्वेश्चन को आपको 10 मिनट देने हैं. इसीलिए शुरू में क्या होता है, हम स्लो लिखते हैं. हम हमेशा स्पीड पकड़ते हैं 40th 50th मिनट में. By then the damage is irrecoverable. Right from the moment go, start writing fast and finish your first question in 10 minutes. That is one aspect. So I hope everybody's got the first point. I've seen this. मैं 400 जज बना चुका हूँ. सबका मैं सक्सेस देख चुका हूँ. सबका रीजंस जानता हूँ. एंड ये पहला कारण, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे जज बने हैं, उनसे कहीं ज्यादा ब्रिलियंट हैं. बट हर बार मार क्या खा रहे हैं यहाँ. every 3 times there is one student, she's a topper. I know she's a topper. 3 बार वो मेंस में फेल हुई. जब वो आई, मैंने कहा क्या हुआ बेटा? सर 70 नंबर का छूट गया. बिकॉज शी इज टू ब्रिलियंट.
वो अपने पहले क्वेश्चन में इतना टाइम बिता देती है और एग्जामिनर कहता है वाओ, बट वाओ क्या, आगे क्या करूँ अगर मैं 70 नंबर आप छोड़ गए हो? हाउ विल आई गिव यू आउट ऑफ नथिंग? दिस इज अ मिस्टेक शी इज मेकिंग. आई हैव बीन ट्रेनिंग हर कि बेटा कुछ भी छोड़ दो, 10 नंबर में आ रहा हो तो छोड़ दो, बट इसके आगे 11वां मिनट नहीं लेना. आई होप आई एम क्लियर ऑन द फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट, नाउ फर्स्ट थिंग वॉज टाइम. राशन योर क्वेश्चंस, टाइम करो, राशनिंग करो. उसके बाद एक जो राशनिंग का एक पॉइंट है कि शॉर्ट क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा टाइम लेते हैं. सो नेचुरली कितना लंबा होना चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड. See, a lot of thing depends on your writing. Some students are very, जैसे मेरी राइटिंग बड़ी है, मैं बड़ा लिखता हूँ, कई ऐसे लिखते हैं. सो यू नो पेजेस कितने भरने हैं वो इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव इन नेचर. पहला, जिसकी राइटिंग छोटी है नेचुरली वो टाइम ज्यादा लेगा. सो इसीलिए ये मापदंड है तो गलत, बट एक मैं फिर भी एक जनरल मापदंड दूंगा. I'll give you a general yardstick how to. So if you have a 15 marks question or a complete question of 15 or 20 marks, you must write 5 pages. I'm saying pages. A page, this is a sheet. 1 page, 2 page. Now you normally in judiciary, we are having unlined papers. कोरे कागज आते हैं, कई जगह पे लाइनों वाले भी आ रहे हैं, दोनों जगह आ रहे हैं. नाउ अगर लाइनों वाले आ रहे हैं तो यू नो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज वी राइट ऑन दिस एंड यू नो यू स्पॉइल योर हैंड राइटिंग. मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग इन बिटवीन so that your answer is seen. Don't write on this, it gives a dirty appearance. Whatever be the line, it gives both. Yes, 5 pages. So 5 pages, this is a sheet. This is one sheet. It has got 2 pages. So 2 pages. So 15 to 20 marks, I should not go beyond 5 pages. If it is a 7 marks question, then I should not go more than 2.5 pages under any circumstances. If it is 5 marks, then maximum 1.5 page. 3 marks, 1 page. Okay, so 5 pages if it is 15 or 20 marks, about 2.5 pages if it is 7 marks, about 1.5 pages are more than enough, or maybe you can spill to 2 अगर time हो आपके पास, and 1 page 3 marks. Now you know अब यहाँ पे जो इतने pages आ रहे हैं, अब जहाँ 1 page, naturally this is the most dangerous part. In 5 pages I can elaborate the way I want. But in 1 page, now is my real test. And that is the reason why आजकल क्या हो रहा है, because short questions ज़्यादा आ रहे हैं. This is the reason why this is a more a test of your legal acumen and of course how well you can synthesize everything. इसीलिए 1 page वाला जो 3 marks का question है, उसको शुरू कैसे करें, मैं उसका पहले एग्जांपल हम लेंगे. I'll just finish up my topic, then I will give you examples how to write. Now, the next aspect is that suppose you are gone short. Suppose you have not done time management. There were 7 questions of 10 marks or whatever, and you have finished 5. You are left with 10 minutes. And 2 questions are still to go. What you do in these 2 questions, make a flow chart. Make a quick flow chart. So whenever you are only 10 minutes are left. And there are 2 questions to be attempted, 3 questions to be attempted. I will make quickly a flow chart. I will write my answer in bullets. So I'll quickly make short points and make a quick flow chart. At least
you will get some marks. Do not do one thing. What happens sometimes, you have 2 questions to attempt, you have 10 marks. You spend one question or 10 minutes. 10 मिनट बच्चे हैं और आपके 2 क्वेश्चन अभी पढ़े हैं. आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट दे देते हो, एक छोड़ देते हो. Had you attempted both, you might have got maybe आधे नंबर. अब यहाँ पे आपको 10, आपने क्योंकि 10 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म किया है, वैसे भी यहाँ पे आपको 3-4 नंबर मिलने वाले हैं. ये आपको 0 मिल गया. ये भी अटेम्प्ट कर देते तो हो सकता है यहाँ पे भी 3-4 नंबर मिल जाते. 4 नंबर बढ़ गए. So please attempt every question, and in the end, if you are left with some questions and you have no time, then quickly scribble flow charts, make points, write your answer in points, give the sections, write an important landmark judgment, then quickly make it what we call a skeleton answer. Okay. Now, next point. How do we attempt a question? This is the next aspect. I'll first go with the 15 marks or 20 marks question. There should first be a proper introduction. Yeah, I know. Introduction should be there. And then there should be a proper body. And then a conclusion. 3 चीजें करनी है. इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन होना चाहिए the jurisprudence of that. Let's take an example. Let's take the case of an approver. Approver का कोई question आ गया. How will I start? An approver who is a creation of section 306 CRPC is an accomplice who has agreed to give evidence as a prosecution witness. The principle of approver is based on the principle of necessity. Because since there is no evidence available, at least let us salvage some conviction at the cost of one acquittal. We can say that the principle of approver is based on the doctrine of salvage. Now this was my intro. 2 लाइन की intro, खट से finish. Now जो आपसे पूछा गया, जो भी क्वेश्चन पूछा गया, उसको डिटेल में लिखो. So now you write the body, and in the end you write an approver is an accomplice and he is not worthy of credit. His evidence should be taken with great care and caution. Brackets में section 114 illustration B. However, if he is, now the question arises, can his evidence be taken as enough to convict others? Brackets में section 133 Indian Evidence Act. Even the uncorroborated testimony of an approver can form the basis of conviction. So मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, एक कंक्लूजन दे दिया, और बॉडी में हमने सारा का सारा बनाना शुरू कर दिया. नो हेडिंग्स. वो LLB स्टाइल होता है, इंट्रोडक्शन, ये कुछ नहीं, पैराज में बनाना है. सेकेंड पॉइंट, मेक वेरी स्मॉल पैराज. बहुत छोटे पैरा होने चाहिए. जितने बड़े पैराज बनाओगे उतना एग्जामिनर बोर हो जाएगा, मिस कर जाएगा आपके पॉइंट. Whenever you are writing points, give arrows, give stars, give the bullets, ऐसा. And छोटे छोटे पैरा बनाने. हर आइडिया के साथ एक नया पैरा होना चाहिए, so that the examiner does not miss your points. If it's a long question, here in a very small corner, make a flow chart. This is how you attempt 15 to 20 marks question. When I come to the next question, let's take the question when I come to 7 marks or 5 marks. Now I do not have the luxury. Now I have to, please remember, please attack the question directly. Suppose a question has come. How does court punish perjury against itself? Now I will not define perjury or anything. I'll go straight to the point. That's in section 195 CRPC. A court can take cognizance of perjury or forgery against it.
However, we have to follow the rules of natural justice. And hence, the procedure for taking cognizance is given in section 340 and the appeal is given in 341. So what happens is, I've started bang on the topic. And in the end, in the conclusion, I say, of course, the court can take cognizance, but then there are so many people who are telling lies in courts. The court has to be now intelligent enough to see which cases to take up and which cases not to take up. And of course, there is another provision under section 344 CRPC where a court can conduct a summary procedure. This 7 marks पूरा मैंने डाल दिया. अब उसमें फटाफट मैंने points लिख दिए. So you have to attack the bull. You have to catch the bull by the horns. सीधा जाओ उसमें. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. I'll give you some examples today. एग्जाम्पल मैं लेता हूं. For example, तलाक. Muslim law में तलाक पे क्वेश्चन आ गया. How will I start? I'll start with the quotation of the Holy Prophet. Of all detestable things known on earth, the most detestable is talaq. Now, I start with a quotation. Talaq is the unilateral power of the male in Muslim law for dissolution of marriage. So quickly, I have gone straight to the point. And then you start discussing. Okay. Now, when I talk about interlinking, Pawan has asked me a question how to interlink. When I go to, let's take an example of CPC. Question aa gaya, how far can foreign judgments be made executable in India? How will I start the question? I'll start with international law. Foreign judgments can be executed in India following the international law principle of comity of courts. Comity of nations is a concept of international law from which flows comity of courts, which means that a judgment of a foreign country can be executable in India just as the judgment of India can be executable in that country. However, there are chances that the judgment may not be absolutely hunky-dory. And that is the reason why section 13 of CPC gives us the clauses in which if a judgment is tainted, then the hearing can be made in Indian court before execution is done. However, the presumption is that all foreign judgments are written properly and after following the rules of law and justice. This thing is clarified by section 14 of CPC. However, there are certain places where we have reciprocal relationships where there is no need for going through the section 13 restraints in section 44A. I have quickly interlinked all the sections. But for this, मुझे सारे sections याद होने चाहिए या सारे चीजें याद होनी चाहिए. तभी मैं पहला मेरा point क्या था? Clarity करो. Make your concept clear. Now, one question I would like to discuss here is about criminal law. When I come to criminal law, say, let's take an example. Now there are propositions. A enters the house of B to steal. B wakes up and now B attacks A with a knife. A runs out from the home, B follows him, and on the road, he stabs A to death. Discuss the liability of B. Now, here, what do we do? How do we attempt criminal law question or other propositions? You will move like a Supreme Court judgment. Always remember your answers should be guided by the Honorable Supreme Court's judgments. You should be writing your judgment, your answer like a Supreme Court judgment. So what do? First, I frame issues. After going through the proposition, the following issues have come up. A, whether B has a right of self-defense against A in attacking A with a knife. B, A has left the house and B has followed him. Does the right of private defense extend even after the threat has gone? This is the second issue. And C, what is the liability of B? ये तीन इश्यूज मैंने, ये तीन चार्जेस मैंने, ये इशू मैंने फ्रेम किए.
और अब इन इश्यूज पे, तो इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, अब मेरा पूरा इसका एनालिसिस, and in the end my conclusion. So we have to write in criminal law propositions my answer like a Supreme Court judgment. I hope I am clear on this very important matter. This is a very very important issue. So I hope सब समझ गए होंगे कि हमें कैसे करना है. अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, फैमिली लॉ को लेते हैं. फैमिली लॉ में अभी मैं आप लोगों को प्लस क्लास में करा ही रहा हूँ, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. सो हाउ विल आई स्टार्ट? सपोज क्वेश्चन सीधा आ गया, modern day Hindu law is based on the ancient sources. Do you agree? Now you have to say that the sources of Hindu law can be divided broadly into ancient sources and modern sources. Ancient sources, and make a flow chart, being Shrutis, Smritis, and customs, and modern sources being precedents and legislation, and of course principles of good justice, equity, and good conscience. हमने बता दी. अब हम ये बोलेंगे, however the legislature source overrides the ancient law because the first aspect of our constitution is equality. So we have to toe the line of the constitution, and this is why the modern sources of Hindu law overweigh and outweigh the ancient sources of. तो मैंने क्या किया, सीधा अब क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा गया था व्हाट आर द सोर्सेज. क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एंशिएंट सोर्सेज हैं उनका आज के मॉडर्न सोर्सेज से क्या रिश्ता है. सो यू नो यू हैव टू गो बैंग इनटू द टॉपिक. नाउ रॉन्ग अप्रोच क्या होगी, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, श्रुतिज आर दिस 3 पेज भर दिए, स्मृतिज आर दिस 3 पेज भर दिए, और एंड में जाके एंड में लिख दिया हाउएवर लेजिस्लेशन ओवरराइड सेक्शन 4. हर लॉ का, हिंदू लॉ का हमारा कहता है कि सेक्शन 4 में लिखा है कि मॉडर्न लॉ विल ओवरराइड द एंशिएंट लॉ. आपने जो चीज तो 5 पेज लिखने थे, एक पैरा लिख दिया, और जो 4 पेज लिख दिए वो ट्रैश है, वो मैंने पूछा ही नहीं है. ये गलती कर रहे हैं आप लोग. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्रिटिकली, सीधा शुरू करो. अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आजकल कोई LLB स्टाइल क्वेश्चन नहीं आ रहा है. आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं क्रिटिकली एनालिसिस करके. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया है लिमिटेशन में, देख लेते हैं क्वेश्चन. एडवर्स पोजेशन इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, डू यू एग्री? अब ये लिमिटेशन का क्वेश्चन है. अब वो पूछ क्या रहा है, एडवर्स पोजेशन जो सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट में है वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, डू यू एग्री? अब लिख, आप जवाब क्या दे रहे हो? सेक्शन 27 says limitation takes away the right, the remedy, not the right. अब लिख क्या रहे हो, पूछ क्या रहे हैं आपसे? This is the mistake everybody is making, और इसलिए 0 मिल रहा है. हम सोचते हैं LLB स्टाइल लिखा है, 10 पेज भराए हैं, सर बहुत बहुत पैसा चला है, करप्शन हुई है. करप्शन नहीं हुई है, आप गलत जा रहे हो. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस. यू हैव, और वो ये चीजें आप कैसे लिखोगे, यहां सब कुछ क्लियर है. आज अगर मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया, एडवर्स पोजेशन इज अगेंस्ट माय फंडामेंटल राइट्स, नाउ यू से दैट merely because the time period of 12 years is over, a person is not only barred from remedy but also his rights are gone. The person who is a squatter, in the words of the Supreme Court, takes all the rights of ownership. Is this fair? Should this not be changed merely because there is a delay? This is an ancient law. Should it be carried on now? इस तरह से मैंने शुरू किया, और इसके भी जब मैं कराता हूं, मैं आपको जजमेंट्स भी देता हूं सुप्रीम कोर्ट पे, जहां उन्होंने कहा है दिस इज अ बैड लॉ, इट शुड बी चेंज्ड. तो वो एंगल पूछा गया. सो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि जवाब देना कैसे है. आपसे जो पूछा गया है वही जवाब देना है. डोंट गो इन मेनी अदर मैटर्स. यू नो, एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं एक एग्जाम में कल देख रहा था, आई वाज टेकिंग दिस बुक, मैं आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ रहा था. क्या एक, यू नो, देयर इज इसमें क्या था कि A and B आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. A इज अ बॉय एंड B इज अ गर्ल, एंड A promises to marry B, and then they have sexual intercourse, and then he goes to his to work in a place, and there he falls in love with another girl, and then he does not marry B.
B now puts up a case of rape. Will she succeed? अब इसके अंदर क्या है, हमने अब सारे इसके जितने जितने अब इश्यूज बनते हैं, जो फ्रेम चार्जेस बनते हैं, वो करना है. Firstly, was the act of sexual intercourse was with the consent of the girl? Is this consent vitiated? First question. Second, at the point of making the promise, was there deception in the mind of A? Issue number 2. And thirdly, will this act amount to rape? And then finally, fourth part, the answer, the judgment. We have to answer the proposition just like a Supreme Court judgment. So I hope you have made, I've made I've cut some ice with you to make you understand कि लिखना कैसे है. मैंने knowledge दे दी आपको. I'm giving you almost all the जो knowledge मैं दे सकता हूँ. आपने imbibe भी कर ली, आपने लिखा कुछ और, तो then where are we? We are nowhere. So please remember, not only do we have to have our concepts clear, but we also must learn to attack the question directly, critically, analytically. Because these days the questions are not straight LLB type questions, they are all analytical questions and they have to be answered analytically. Yes, that is why Madhavi, read as many, जो मैं आपको जजमेंट्स दे रहा हूँ, आप प्लस क्लास में देखते हो, मैं बहुत सारी जजमेंट्स देता हूँ, वो सारी जजमेंट्स एक बार पढ़ लो. You don't just have to read. In fact, landmark तो पढ़नी है, because you learn a lot. Indrani, yes, I am taking almost all the major laws, but then other educators are as good, if not better than me. Thank you. If like Supreme Court, then it will be too. No, Yash Pratap, यही तो आपकी वो चाहिए स्मार्टनेस कि जजमेंट, वो हमने जजमेंट वैसे थोड़ा ना देनी है, हमने तो फॉर्मेट वो देना है. ये नहीं कि आप 15 पेज भरते जाओ, जैसे मैंने आपको बोला फटाफट लिखना है आपको. गौरव एक मेरा स्टूडेंट थे जो दिल्ली में, दोनों आ गए थे, हस्बैंड वाइफ, दिल्ली जुडिशरी में. उन्होंने किताब लिखी थी, रॉबिन उसका नाम है, पूरा नाम नहीं पता. उनकी अच्छी किताब है जजमेंट राइटिंग. Some format. Rajvinder, I just told you, format. Yes, Yash Pratap, Robin Jeet, उसकी वाइफ, दोनों जज हैं. Okay, now let me give you quickly a format. Our format is firstly the jurisprudence introduction, secondly the body in points, and finally the conclusion. ये हमारा बेसिक फॉर्मेट होना चाहिए. इसके अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा एक पैरा लिखना है, और अगर वो 7 नंबर का है तो 2 लाइन लिखनी है. कंक्लूजन में भी 2 लाइन लिखनी है बस, अगर वो 7 या 5 नंबर का है. बट ऑलवेज शो केस योर आंसर. डोंट स्ट्रेट अवे राइट लाइक LLB. डू नॉट राइट थिंग्स विच आर नॉट बीइंग आस्क्ड. दिस इज अ वेरी डेंजरस टेंडेंसी दैट वी टेंड टू राइट इन डिटेल समथिंग विच वी नो. सो जो में आता है उस पे पूछा, आपसे 3 नंबर का गया है, आपने 5 पेज भर दिए, आपको 1 पेज भरना था, just because you have knowledge on that issue. So these are all very dangerous things जो हमें हमारे अटकाती हैं problems. The point in yes Fauziya, you have to write down the point. जैसे मैंने आपको अभी बताया, उनको point wise लिखो. अगर टाइम नहीं बचा है तो point wise लिखो. See, basically Fauziya, you have to showcase your questions. And Fauziya, I think a lot of students from Pakistan ask CPC from me, क्योंकि CPC उनकी problematic है. Go to my YouTube channel, और वहाँ पे CPC के मेरे lectures काफ़ी हैं, उनमें चेक कर लीजिए. The way Supreme Court, yes, exactly Pulkit. जैसे Supreme Court approach करता है problem को, हम judges बनने वाले हैं, वैसे ही हमने चलना है. Regarding Padyansh, beta, that I think right, this you have to go to Ritu ma'am. She's the right person. Heading, no Rajvinder, no headings, no LLB style writings. बिल्कुल भी LLB style नहीं लिखना है आपने. It has to be a mature. Does Supreme Court give any headings? जैसे Supreme Court की judgment होती है, वैसे ही मुझे लिखना है. To complete syllabus, 13 months minimum. In introduction, Indrani, I just told you the jurisprudence. मैंने आपको, मेरे, अगर आप मिस कर गए हो, मेरा लेक्चर रिवाइंड करके देखना, मैंने कुछ टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है. Yes, I'll be teaching constitution.
Need to read the editorial. Yes, Diljot, editorial pages are the key to success of essay. Yes, Madhvi, no elaborations. आपको टाइम लिमिट और पेज लिमिट देखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती हैं. टू द पॉइंट पैक करके देनी है अपनी इंफॉर्मेशन. हैज टू बी पैक्ड. Ashmin, only the landmark cases. Diljot, Ritu ma'am is the best in Punjabi, probably the best in the country. I'm giving case laws. Harkiran. In a body of answer. Short, मुझे समझ ही नहीं आ रहा हरकिरण आपका आंसर. क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा. Okay. Okay. So, should be bookish language technically? No, don't bother. It should be a language which should be able to you should be able to make the examiner understand. Don't bother about bookish or technically sound language. Don't bother. अगर आपने अपने पॉइंट समझा दिया, more than enough है. Don't bother about these. वैसे आहिस्ता आहिस्ता अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर हो मेरे पास, तो मैं काफी लीगल लैंग्वेज यूज करता हूँ. आहिस्ता आहिस्ता आप इम्बाइब कर जाते हो. Where can Shrishti, Sri Ram Bayrax? I have no idea. I think Telegram ग्रुप में मिल जाएंगे. उनके सारे अभी उनका CPC का बहुत ही अच्छा है. Compulsory to case laws? Not necessarily. Case law अगर वो if it is landmark तब तो जरूर देना है. Do we need to read books? सक्षम ऐसी एक किताब पढ़ लो जो आपको समझ आती हो. मेरे नोट्स more than enough है. Yes. एक बात थोड़ा कंफ्यूज हूँ. फौजिया, व्हाट आर यू कंफ्यूज? प्लीज लेट मी नो. मुझे पूछिए. विल चेक. ओके. क्वेश्चंस व्हिच आस्क फॉर केस लॉज. यस अश्विन, इफ दे हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर केस स्टडी देन यू हैव टू गिव केस लॉज नेचुरली. ओके बेटा. नहीं, आप लोग जाओ SRA में जाइए. जो सब्सक्राइबर हैं प्लीज. आई पर्पसली टाइम्ड इट दिस वे दैट आपकी SRA मिस ना हो. यस, टेलीग्राम चैनल हमारा है अपना, अनिल खन्ना अनअकैडमी चैनल. उसमें आप चले जाइए, वहां मिल जाएगा. ओके, सो आई थिंक विल नाउ स्टॉप. फौजिया, क्रिमिनल कोर्स स्टार्ट करूं तो फिर मुझे IPC करना चाहिए या CRPC? फौजिया, इन पाकिस्तान यू डोंट हैव IPC. इन पाकिस्तान यू हैव योर शरीयत लॉ. तो वो उसको करो आप. और CRPC तो करना ही है, वो आपका कॉमन है. वो सेम पहले CRPC और कट्ठा करो. ओके. Should it be pairwise or should be differential? Then it should be pairwise, and you can make a flow chart if you have time. Safe. No, Amit, there is no partiality between Hindi medium and English medium. ये लॉ का पेपर है, ये लैंग्वेज का नहीं है. PPC है हमारी. अच्छा, ओ आई सी. तो फौजिया, यू कैन ऑलवेज प्लीज फॉरवर्ड इट टू मी. लेट मी सी आपका सिलेबस क्या है. तो इंग्लिश में सिलेबस भेज दीजिए. आई विल बी एबल टू गाइड यू. ये पाकिस्तान का मैंने PPC नहीं. अच्छा, पाकिस्तान पीनल कोड है. इज पाकिस्तान पीनल कोड बेस्ड मोर ऑन शरीयत और इज इट मोर बेस्ड ऑन IPC? आई रियली हैव नो आइडिया. Telegram channel, no Indrani, only the students. I'm so sorry, only they can take. पर एक है हमारा, एक चैनल है जो सबके लिए है. UA Unacademy अनिल खन्ना चैट. वो सबके लिए ओपन है, इवन इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर. अच्छा फौजिया, देन यू अटेंड माय YouTube लेक्चर्स. IPC पे बहुत लेक्चर्स है मेरे, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा आपको. मुझे PPC भेज दीजिए, पाकिस्तान पीनल कोड. आई विल जस्ट गो थ्रू इट क्विकली एंड आई विल बी एबल टू गाइड द पाकिस्तान स्टूडेंट्स. ओके. फाइन. आप ना फौजिया गो टू माय YouTube चैनल अनअकैडमी अनिल खन्ना YouTube चैनल पे चले जाओ. आपको मेरे बहुत सारे फ्री लेक्चर मिलेंगे IPC पे. बहुत क्लैरिटी हो जाएगी उसमें. Why most of the candidates?
बिकॉज दे समटाइम्स आर मोर. अब आज ऐसा नहीं है, आजकल जो मेरे स्टूडेंट्स पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम नहीं आ रहे हैं. इनफैक्ट आई विल से मेजोरिटी अब हिंदी मीडियम या पंजाबी मीडियम के आ रहे हैं. शुड बी ट्राइड. नागेश, मैंने ये पूरा डिटेल में आपको सब्सक्राइब. अच्छा, यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर. सी, एक तरीका, गो टू माय प्रीवियस, नागेश, गो टू माय प्रीवियस लेक्चर ऑन दिस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस. उसमें मैंने बताया हुआ है बेयर एट कैसे पढ़ना है. वो आप अटेंड कर चुके हैं? अच्छा अच्छा. लेट मी टेल यू, लेट मी हेल्प यू फौजिया. आई वुड लव टू हेल्प ऑल माय स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो. जिस तरह से मुझे आप बताइए, मैं ज़रूर मदद करूंगा. मुझे आप बताइएगा हाउ आई कैन डू इट. यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम चैनल. बंगाली मीडियम, इंद्रानी, डजेंट मैटर बेटा. वहां पे बंगाल में आपका होगा तो कोई बात नहीं, बट आई वुड ऑल्सो, आपका इंग्लिश भी ठीक होगी. अगर इंग्लिश ठीक है तो आप कहीं भी अपीयर हो सकते हैं. यस आई नो विजेंद्र, हिंदी वाले आजकल बहुत है और आजकल इंटरव्यूज हिंदी में ही हो रही हैं. गौरव, नो लिंक रिसीव. प्लीज contact the Unacademy people. They'll send you the link. Harkiran, what is your query? Is it in the questions? I have just to take the questions. Thank you Yash, thank you. Judgment writing tricks. विजेंद्र, जो मैंने बोला है वही आप एक बार देखो, उसमें मैं करूंगा. And Fawzia, you can always come to the Unacademy Anil Khanna chat on Telegram. Send me that. I will see what I can do. I'll see the questions now. Jay, very confused about whether answer should be in bookish. No, it should be in a normal working language which the examiner can understand. वो चलाओ. How to write name like plaintiff versus defendant, like plaintiff. Yeah, you have to just write so and so versus so and so Supreme Court. अगर याद ना भी रहे, as the Honorable Supreme Court has said, बस इतना दे दो. अगर कुछ भी याद ना रहे तो. Brief of my answers in a concise way. Yes, this will take time. पुलकित, जिस दिन ये आप कर गए तो उस दिन तो जज बन गया. यही होता है, जब आप पहले उसको कंडेंस करना सीख जाते हो, वही सक्सेस होती है. दैट इज द मेन रीजन ऑफ सक्सेस. डू यू टीच हिंदी फॉर हिंदी मीडियम? नहीं बेटा, कोई हिंदी मीडियम का अलग नहीं है, क्योंकि मेरा भी इतनी अच्छी नहीं है हिंदी. वी आर टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. Which Bear Acts? Astha, Bear Act is the base of success. If you master your Bear Act, half your battle is won. Every Bear Act has to be referred. Practice. सक्षम बड़ा मुश्किल होता है. मेरी ये राय होती है, कोचिंग आपका 9 से 5 चलती है और 7 दिन हफ्ते में चल रही है. तो आई गेस पहले अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करो, फिर बाद में कोर्ट में जाओ अगर आपको जाना है. कंसंट्रेट फुल्ली ऑन वन थिंग. Don't have too many fires running together. Acha, Gaurav, no reply. Acha, okay, I'll talk to them. Please send them again, please. Let me know अगर नहीं हो तो. About students, आकाश 400 के करीब हैं. 17 तो एडीजे हैं और अब तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सब जगह है. सेल्फ प्रिपरेशन. अनन्या, क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट एंड बेयर एक्ट की मास्टरी, 2 चीजें. फाइन, आई थिंक वी हैव आंसर्ड. LL, you are not a subscriber. I take 7 months minimum. If the marks in HS is not good, then will it become factor 2? No, not at all Indrani. आपके बिल्कुल 3rd डिवीजन हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अब वहां कैसे करो वो इंपॉर्टेंट होता है. If you are taking a Bear Act Asta, then always take the latest ones. Always better. Unacademy, हाँ गौरव, सेंड टू बेटा Unacademy को जाओ, एक बार उनको बात करो, फोन भी कर लो कि मेरे को आप लिंक अटैच करो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पुलकित, गॉड ब्लेस यू. What should we do to want to study in Hindi? बेटा, I think they have to take such educators जो सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं. बहुत रेयर मिलते हैं. मिल जाएं तो I guess that should be the right way. There is no other option बेटा. Nothing is hard, Prerit. Nothing is hard.
सब हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपकी नॉलेज अगर है तो मेरे बच्चे सब निकल रहे हैं। यूपी तो उनको बहुत केक वॉक लगता है। प्रीलिम्स मेंस नॉर्मली 2 महीने, यूपी में तो 1 महीना मिलता है। थैंक यू इंद्रानी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो विल स्टॉप हियर। You told in plus class to frame your heading and questions, not to write long para. हाँ बेटा, वो हरकिरण, I was telling you how to make your notes. लॉन्ग पैराज नहीं लिखने, मैंने पहले भी आपको बोला था ना, आपके एग्जाम्स में आपने लॉन्ग पैराज लिखने हैं, आदत ही नहीं डालनी। हेडलाइंस तो मैं आपके अपने लिए बना रहा हूँ, जो आप अपने लिए हरकिरण नोट्स बना रहे हो, ताकि कल को जब आप रिवाइज करो तो आपको होना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू से नो हेडिंग्स विल बी मेड। आपकी अपनी हेडिंग्स होंगी फॉर योर ओन नोट्स, ताकि कल को जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप कहाँ से देखोगे, आप अपने लिए। वो मैंने बोला था, ये नहीं कि आप क्लास में जाके, एग्जाम में नहीं लिखनी है हेडिंग्स, वो बचपना लगता है। ओके, सब जगह आज तक 2 ही महीने मोस्टली मिल रहे हैं। 13 महीने मिनिमम LL, नॉट लेस देन 13 मुझे लग रहा है। थैंक यू अमित। नो गौरव, अब you have to convey whatever you know as quickly as possible. Don't bother about the words. You have to write beautifully. That is what we do. Okay, so we'll stop here. Please attend your SRA classes. See you all. इंटरव्यू के लिए आफ्टर प्रीलिम्स मेंस के बाद 1.5 महीना 1.5-2 महीने। ऑल द बेस्ट देन, गॉड ब्लेस यू।